Assalamu alaikum. Good evening. Thank you for coming to Kuch Khaas. I'd like to thank all of you for coming today. My name is Neelofer Afridi Qazi. I'll be moderating today. The topic of discussion is the domestic violence bill, which, as I understand, is being discussed in the evening session in Parliament as we speak. Today we have with us barrister Babar Sattar, who is well known to Kuch Khaas and also is a columnist who discusses legal issues. And he has been tasked to look at our constitution and the bill and see where does it fit in or doesn't fit in terms of the rights the state bestows on women and children and men in a social contract of marriage and as individuals. And then since this bill has met in opposition in terms of being un-Islamic, we thought we should also have Maulana Tahir Ashrafi, who is a well-known commentator on Islam in public forums and is published as well, to also look at the bill and see where does it meet or doesn't meet the Islamic principles that have been raised. It's a very simple law. If you read through it, it criminalizes violence within the home. So essentially, the difference, the important thing that it does is it brings out domestic violence out of the private realm and brings it in the public realm. When you criminalize something, it's a crime against society, and so the state can take action. That's the biggest fundamental change, and so a lot of the conversation that's going to happen is going to be about privacy of the home, and there's a relationship. Marriage is a relationship. You bringing it out in the public arena. Relationship between parents and kids is considered a private thing. That's also being brought out in the public arena, and I think that's the only noteworthy thing. Other than that, it's a very conservative law. It uses standard concepts that we already have in the Criminal Procedure Code and simply applies that to women, children, men, or any vulnerable person. That's how it defines an aggrieved person. It can be a woman, a child, a man, or a vulnerable person who's subjected to domestic violence. And so and then it talks about the concept of assault, an attempt to assault, criminal force, criminal intimidation, harassment, hurt, mischief, wrongful confinement, and these are all things that we already have in the Criminal Procedure Code. So any of these would constitute a crime if two people who were unrelated were to indulge in any of these acts. It does introduce a few new concepts as well. It talks about economic abuse. It talks about physical abuse within the home, emotional abuse, sexual abuse, introduces the concept of stalking, which I don't think we previously had in the Criminal Procedure Code. So it does, given that our family laws have been have become slightly archaic, given that they go back to the 60s. And so there's been a lot of movement in terms of how family laws in other jurisdictions regulate the relationship between a husband and a wife and things within the home. We're still stuck with an old concept. And so in our family law or in our divorce law, we don't have the concept of emotional abuse, or within the marriage, we don't have the concept of sexual abuse. Consequently, we also don't have the concept of economic abuse, and these are some of the things that people are confronted with. If you go through a divorce, all you get is haq meher, and that's pretty much it. There's no concept of emotional investment or economic investment or family assets, so as to speak. So although this law doesn't change our family laws or divorce law, but it kind of recognizes that there are other contributions or there are other experiences that that have to be taken into account when you're looking at some of these relationships. Then in terms of remedies, it's pretty straightforward. It enables the court to provide monetary relief. It enables the court to provide interim relief in terms of protecting a vulnerable person, a grieved person within the home,
by prohibiting others from throwing him or her out, from preventing family members from intervening and intimidating this person. It creates a provision for custodial orders. So if somebody is aggrieved, especially if it's a child, it can be handed over to a parent who's not not causing offense. It also creates other surrounding institutions such as service providers. So, you know, there are other institutions that are being created around it to handle some of these issues. It talks about the concept of counseling. So if you look at it, it tries to create both social and legal institutions around the problem of domestic violence. So there can be counseling to the extent that the couple or whoever is in the relationship wishes to move on. There are service providers who will provide facilities to house people who are subjected to violence. Then there is a concept of social, a protective committee, which is going to be people who are chosen from the society, and so that kind of brings in the social fabric, involves the social fabric as well. And then there are obviously penalties that the court can send the person who offends to jail. There's also fine. There's a concept of habitual abusers, second, third time, and proportionately the jail term and the fine goes up. मैं गुज़श्ता कई दिनों से इस बिल को पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ, और मैंने कुछ दोस्तों से भी राब्ता किया. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज अगर वो हज़रात भी यहाँ होते तो वो ज़रा बता देते कि इसमें कौन कौन सी शिकें गैर इस्लामी हैं, ताकि हम उस पर बात कर सकते. ये कह देना कि ये सारा बिल ही गैर इस्लामी है, ये तो मुझे समझ नहीं आता है. इस्लाम जो है वो तो एक परिंदे और एक दरख्त के हकूक़ का भी मुहाफ़िज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उसमें ये भी है कि जो फलदार दरख्त है उसको ना काटा जाए, जो हरा दरख्त है उसको ना काटा जाए. तो वो किस तरह जिस इंसानियत और इंसान को जिस चीज़ से आगे बढ़ना है उसके हकूक़ के गसब की बात कर सकता है इस्लाम. कुरान की एक आयत से बहुत सारे हमारे मुफस्सिरीन ये ले रहे हैं कि जी औरत को मारना जायज़ है, लेकिन अगर कुरान की दिगर बहुत सारी आयात को देखें तो वही जुमला कई जगह आता है. तो अब अरबी के तो एक लफ्ज़ के कई कई तर्जमे हैं, जिसमें जिस तरह मैं एक गुजारिश करूं, जाफ़र एक लफ्ज़ है, उसमें जाफ़र जो है वो गधे को भी कहा जाता है, जाफ़र खरबूजे को भी कहा जाता है, जाफ़र इंसान को भी कहा जाता है. तो अब आप उसका कौन सा तर्जमा लेंगे और किस वक़्त लेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इस्लाम ने ये हक़ मर्द को दिया है कि वो औरत को जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी बना दे या वो अपनी एक बांदी के तौर पर रख ले. इस्लाम ने उसको मेरा ख़्याल है मर्द से ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, इसीलिए मर्द को हर जगह पर पाबंद किया है. लेकिन कुछ कुरान की आयात का इस्तिदलाल करके ये कह देना कि औरत के सारे हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं और मर्द के सारे हकूक़ जो हैं वो, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हमारे दोस्त 4 शादियों की बात करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि 4 शादियों की उस शख्स को कैसे इजाज़त दी जा सकती है जो एक बीवी से 3 बच्चे पैदा करे और वो तीनों की ना तालीम पूरी करे, ना खाना पूरा करे, ना रिहाइश उनको मेयार के मुताबिक दे, और फिर कहा जाए कि इसको जी दूसरी से भी शादी की इजाज़त दे दी जाए. और पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत अहनाफ की है जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने एक शादी की और ये कहा कि जो एक शादी करता है वो अमान में रहता है और जो 2 शादियां करता है वो अपने लिए अजाब पाल लेता है. ये इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, मैंने नहीं कहा. तो जब मैं इस सारे बिल को देखता हूँ, हाँ हमारी कुछ मशरकी रिवायात हैं, हमारे कुछ एक हमारा अपना कल्चर है पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान का एक अपना है, अरबों का एक अपना मिजाज है. अगर कोई चीज़ उससे मुतसादिम है तो उस पर बात की जा सकती है, और अगर कोई चीज़ इस्लाम से भी आप कहते हैं मुतसादिम है तो उसकी कोई तशरीह सामने लेके आइए, उसकी कोई दलील सामने लेकर आइए और उसको कौम को बताइए कि इसमें ये चीज़ें जो हैं, अगर ये कहा जाता है कि कोई किसी की जासूसी ना करे तो ये तो कुरान ने हुक्म दिया है.
کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہا جاسوسی میں مت پڑو. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی مت جاؤ اس کے پیچھے، مت جاؤ دیکھنے کے لیے، اگر آپ اس جگہ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو جاسوسی کرنی پڑ رہی ہے تو وہ گھر کیسے چل سکتا ہے؟ تو قرآن نے تو اس سے آگے جا کے کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. جاسوسی تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ کسی کو دوسرے کے آگے جا کے اس کی برائی مت کرو کہ بھئی یہ میرے گھر والی یا میرا گھر والا یا یہ بچہ یا یہ عورت یا میرا دوست جو ہے دوسرے دوست کے ساتھ. اور اس کو کہا کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ گوشت کھانا اپنے بھائی کا. تو میں یہ نہیں سمجھ پایا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی مرتبہ یہ کوشش کی جائے کہ ان حضرات کو بھی بلایا جائے جن کو اعتراض ہے. ہم نے کوشش کی تھی